Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, as we are doing foreign currency exchange risk, we have already discussed many different measures and many different instruments that can help you diversify or decrease the risk associated with foreign exchange transactions because you are dealing with different currencies. Lastly we have discussed for the money market hedge, that when how you can hedge your foreign transaction while you have to pay to the foreign market, or you have to make payment in the foreign currency, or if you want to collect foreign currency receipt in the future. So what you will do, there are many instruments which will help you to decrease the risk associated with foreign currency transaction. Foreign currency derivatives are another instrument. It's another instrument or number of collection of instruments which will help you to decrease risk associated with foreign currency transactions. Now currency future, because when we are discussing that we want to decrease foreign currency risk, and as I have discussed in the previous slide, that foreign currency risk can be reduced by using derivatives, and these derivatives include currency futures. And what are currency futures? Actually, currency futures are future contract for currencies that specify the price of exchanging one currency for another at a future date. And the rate of currency future contract is derived from spot rate of the currency pair. And currency futures are used to hedge the risk of receiving payment in a foreign currency. So these are the just like forward contracts, but they are the contracts that is based on the spot rates of the currencies, and these are used to minimize risk in order to decrease the risk of the payments which are done in the foreign currency. Like इसमें ये है कि आप क्या कर रहे हो कि आप देख रहे हो कि फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने फ्यूचर में कोई पेमेंट लेनी है, तो उस पेमेंट के लिए आप आज ही से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो बेसिस है, मतलब आपने अभी से ये डिसाइड कर देना है फ्यूचर में जब आपकी पेमेंट लोगे तो वो किस रेट पर होगी। इससे इससे ऐसा होगा कि ये आपकी जो रिस्क है कि फ्यूचर में अगर आपका एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी की वजह से या किसी भी वजह से आपका करेंसी जो आपको पेमेंट जो है वो डिक्रीज अमाउंट में मिलने का खतरा है, तो आप वो उस पर उधर जो है वो फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने एक स्पॉट रेट डिटरमिन कर दिया, उसी स्पॉट रेट के ऊपर आपकी फ्यूचर की पेमेंट या ट्रांजैक्शन जो है वो होगी। लेकिन इसमें अगर आप देख लें कि यही चीज आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी करते हैं, बट देयर आर सर्टन स्पेसिफिकेशन in which we can say the future currency futures are different from forward contract, that like in this futures are in the future contract the company's position is fixed by the rate of exchange in the future contract, like just like forward contract, and it is a binding, like it's a contract, it's a promise that this contract would be executed and done in the future, and it is the binding element is there that you have to fulfill this thing. As we have discussed that future contracts are similar to forward contracts, but there are certain differences which are there in future contract as compared to forward contracts. Like when we talk about futures, so futures you can say instruments which can be traded on future exchange. There are standardized future exchanges on which these futures are being traded. The contract which guarantees the price, known as the future contract, is separated from the transaction itself, allowing the contract to be easily traded. Like इसमें आप क्या करते हैं कि आपका जो contract है आप उसको जो
जो वो कॉन्ट्रैक्ट जो गारंटी करता है प्राइस का, उसको हम सेपरेट कर देते हैं ट्रांजैक्शन से। इसकी वजह से ये आसानी हो जाती है कि वो इक्वली इजीली जो है वो फ्यूचर एक्सचेंजेस में ट्रेड हो सकता है। देन सेटलमेंट टेक्स प्लेस इन 3 मंथ साइकिल्स। आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्टैंडर्डाइज टाइम पीरियड नहीं है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर्स, सो देयर इज स्टैंडर्डाइज्ड सेटलमेंट टाइम पीरियड, दैट इज 3 month cycles, that this could be settled in 3 months, like in March, in June, September, or December. So we can say that it is a quarterly contract, and every 3 months you have to make settlements. So futures are standardized contract for standardized amount. And you cannot make future contracts for any amount. You have to make future contract for standardized amount. And for example, when we see the Chicago Mercantile Exchange trades sterling futures contract with standardized amount of 62,500 pounds sterling. एंड शिकागो, मतलब शिकागो में जो है वो उनका जो मर्केंटाइल एक्सचेंज है उसके बीच में आप देख लें कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनकी स्टैंडर्डाइज प्राइस जो है वो 62,500 है। इसमें फिर आप जो है ना वो इसमें अगर आप देख लें ओनली होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ दिस अमाउंट कैन बी बॉट एंड सोल्ड। मतलब आपके पास अगर 62,500 तो आपके पास एक फ्यूचर होगा, फिर एक जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, और आप जो है इसके मल्टीपल्स या थोड़ा सा होल अमाउंट जो है ना इसी की जो है वो ट्रेड होती है, इसके अलावा और कोई अमाउंट आप ट्रेड नहीं होती। द प्राइस ऑफ अ करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज द एक्सचेंज रेट फॉर द करेंसी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली आपका जो प्राइस है कॉन्ट्रैक्ट का उसके वही एक्सचेंज रेट है जो आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किया हुआ है। Now, other differences between a forward contract and future contract is that when we talk about future contracts, there is always a buy and sell element in future contract. For example, if there are future contracts which are dominated in sterling, so certain conditions are there, like sterling to be sold on a date in the future. Like when you, if you want to buy sterling in a date in some date in future, so what you will do is you will buy sterling contract on the same date in which you want to sold that sterling, and in order to offset the transaction, what you'll do is you will buy the sterling contract on the same date to offset the transaction. Then then after that you can sell those future contract. Now same is the case with the buy element. Like if you want to bought a certain sterling in the future date, so sell we have to sell sterling future contract on the same date to offset the transaction. Then when we buy those future contract now, मतलब इसमें उल्टा हो जाएगा। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि उसी डेट पे, जिस डेट पे आप उसको खरीदना बेचना चाह रहे हैं, मतलब सेल अगर करना चाह रहे हैं, तो आप उसी डेट के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीद लेंगे और फिर उसके बाद जो है ना उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आज जो है वो सेल कर देंगे। सेम आप अगर उसको बाय करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आज मतलब आज वो कॉन्ट्रैक्ट जो आज की डेट के हैं, मतलब वो सेम डेट के हैं जिस डेट पे आपने उसको परचेज करना है, तो आप क्या करेंगे उसको जो है वो सेल कर देंगे, और वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जो है ना आज जो है वो उसको बाय दोज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ना, और उसको जो है ना वो आज की डेट में जो है उसको परचेज कर लेंगे। तो क्योंकि देर इज एज ईच कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर स्टैंडर्डाइज अमाउंट एंड फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। एज अगर आपको याद हो हमने पीछे डिस्कस किया था कि आपके जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 3 महीने के लिए होते हैं, मतलब उनकी जो एक्सपायरी डेट होती है या पेमेंट या उसको जो रिलीज करने की डेट होती है वो 3 मंथ्स होती है। हर 3 मंथ्स, हर क्वार्टरली, हर मतलब क्वार्टरली आप उसकी जो है वो पेमेंट करते हो, और उसकी जो अमाउंट होती है वो फिक्स्ड होती है। अगर आप, हमने एक एग्जांपल लिया था शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज की, कि वहाँ की जो है वो आपकी 62,500 पाउंड जो है वो उसकी अमाउंट है, और इससे ज़्यादा और कम कुछ नहीं होता। आपके अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर एक है तो वो दैट शुड बी ऑफ 62,500, और अगर दो होंगे तो वो उसको मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। तो वो इसमें दोनों चीज़ें जो हैं वो फिक्स हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जो फॉरेन करेंसी का एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा जो है ये बेयर नहीं करता, मतलब इसके ज़्यादा इसकी में आप बहुत ज़्यादा रिस्क को कम नहीं कर सकते, क्योंकि इट रेयरली कवर द एग्जैक्ट फॉरेन करेंसी एक्सपोजर, कि मतलब एग्जैक्ट जो जितना भी आपका रिस्क है ना उसको कवर नहीं करता।
Now this can be explained with the help of this example. Today is February and US export expected to receive 5 lakh pound in June. In the future they are expecting to get some payments from their exporters, and current spot rate now is 1.65 is equal to 1 pound. The quote for the June sterling future is 1.65. Standard size of future contract is 62,500 pound. This UX exporter uses futures to hedge its currency risk by selling sterling future. They are expecting that there would be certain changes in the exchange rate. Therefore, what they have done is that they have hedged its currency by risk by selling sterling future. In June, the company received 5 lakh pounds, and in June the exchange rate moved to $1.70 is equal to 1 pound, and the future rate is in June was in June was also 1.70 dollars. Now we have to show the outcome of this future head, and in the next slide we will see the solution of this question. Now, if you look at the solution, first of all, as we have discussed earlier, that the one contract is dominated at 62,500, and the total amount they are expecting to receive is 5 lakh. So what we'll do is we will divide 5 lakh into 62,500. So it shows that we have to we have there would be 8 contracts which we have to sell. So exporter need to sell futures in February. The hedge is set up by selling 8 contract multiplied by 62,500 is equal to 5 lakh for June delivery at 1.65. In June the future is closed, so what we'll do is buy 8 contract, that is 62,500, and this 5 lakh for June delivery at 1.70. The summary of the future position is that they have sell pounds for 1.65 and buy it for 1.070, and there would be the difference is point 0.5. Like there is this would be the loss on the future position, because and the loss is 25,000, and prevailing spot rate is 5 lakh pound at the rate of 1.70, and 68,500 8 lakh 50,000 is the is actually when you exchange it with dollars, so you'll be getting 8 lakh 50,000. So if we look at into this the detail, so we can notice that sterling appreciated and the dollar depreciated in the spot rate over the period, and causing an increase in the value of sterling as follows. Like a value of dollar 5 lakh pound in sorry value of 5 lakh dollar is in February is 1.65, and it would be 8 lakh $25,000, and a value of 5 lakh pound in June is 1.70 multiplied by and in June at the rate of 1.70 it is 8 lakh 50,000, and there is 25,000 difference, and which there so 65,000 difference in the value. And if we look at that, there is increase in the value of sterling remittances in 25,000, and loss due to future position is 25,000. So as you have hedged this transaction with the help of future contracts, so this the decrease, or you can say the loss on the future position, would be hedged by increase in the value of sterling. Thus the future contract removes risk, both upside potential as above and downside risk as well. Now, other form of currency derivatives are currency option, and it is actually similar to forward contract, but there is a little difference between forward contracts and these currency options.
as they give the right but not the obligation to buy or sell currency at some future point at predetermined rate. Like in the forward or in the future there is a binding, but in case of options you are not binding. There is no binding. You are not only there is no obligation that you definitely have to buy or purchase or sell that currency or at future determined at future predetermined rate. And the company can exercise option at any time when it sees that it is in the favor of the for the company to use this. So if they think that the spot rate is favorable, so they should not go for this currency the option currency option. And a certain time there is no need for for the exchange of currency. So in that case there is no need for exercise an option. Like when it says that let it lapse, that means that there is no need for using the options when your current spot rate is favorable, and there is no need for making or exchange of currency in future. And the downside risk is eliminated by exercising the option lapse. Like when in future there would be an expectation that you will be damaged or currency would be depreciated, and you will be you had a you cannot benefit from in the future. So in that case, when you let it lapse, so it would be if in the future or if in the benefit of the company, and it can also eliminate the downside risk of the currency. Then when you are or using option, it's more useful when there is uncertainty about the timing of the transaction, or when the exchange rates are more volatile. Like certain times there are certain situations in which you are not more certain about future volatility of exchange rate, or there is a certain uncertainty in the environment. In that case you can use the options for eliminating the risk of uncertainty in the future. Now, there are different types of currency options, and these option may be put option. Put option is actually the right to sell currency that you want to get a right that you can want to sell the currency and or in the future. Or call option, like call option is right to buy buy currency in certain future time period. And when it's come to the types or the when you exercise these options, there are two options available. One is over the counter from banks, like you can get this option from the bank, and these are tailored means that they are designed to for the wants of customer, and it can be used by small and medium sized companies. like अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि ये दो तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं, एक पुट ऑप्शन है, एक कॉल ऑप्शन है। पुट ऑप्शन ये होता है कि आपको फ्यूचर में आप एक राइट ले लेते हो कि आप इस करेंसी को सेल करोगे एक स्पेसिफाइड रेट पे, और कॉल ऑप्शन ये है कि आप सर्टेन स्पेसिफाइड रेट पे फ्यूचर में बाय करोगे। अब ये जो एक्सरसाइज होती है ये दो तरह से हो सकती है। एक तो है वो आप बैंक के थ्रू, कि बैंक जो है उन्होंने उसको हम कहते हैं ओवर द काउंटर ऑप्शन। उस ओवर द काउंटर ऑप्शन में क्या है कि आप ये बिल्कुल डिजाइन हुए होते हैं कुछ कस्टमर की स्पेसिफाइड नीड्स पे, और ज्यादातर जो आपकी स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज हैं वो इसको यूज करती हैं। देन एन एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन, लाइक सेकेंड ऑप्शन ये है कि वो जो एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं, जिस तरीके से हमने फ्यूचर्स की बात की थी कि फ्यूचर भी जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्यूचर एक्सचेंज रेट्स पे फ्यूचर एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड होते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह ट्रेड होते हैं एक्सचेंजेस पे। और ये जो है वो ये वाले जो ऑप्शन जो आपके एक्सचेंज रेट में ट्रेड होते हैं, ये बड़ी और लार्जर कंपनीज को के लिए यूज होते हैं, और वो इसको यूज कर सकती हैं क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट के होते हैं, तो इसलिए उनकी नीड्स जो है वो उससे फुलफिल हो सकती हैं। Now we'll see with the help of this example, like a US exporter is due to receive $25 million in 3 months time. Its bank offer a 3 month put option on $25 million and an exercise price of $1.50 is equal to £1 at a premium cost of 30,000 pounds.
So you are required to show the net pound receipt if the future spot rate earlier is dollar 1.60 is equal to 1 pound, or 1.40 is equal to dollar is equal to 1 pound. Now we will see the solution. As we know that when we divide the dollar with smallest amount, we'll get the highest pound receipts, and the premium is paid no matter what, so should be ignored for the purpose of determining whether to exercise an option. Like अभी देखें आपने उसने ये कहा कि आपको फ्यूचर में 25,000 जो है ना वो मिलने हैं, और आप उसको जो है ना वो पुट ऑप्शंस के साथ जो है ना वो सेटल करना चाह रहे हैं। तो उसमें यह है कि इसमें आपने क्या है कि ये देखना है कि एक्सरसाइज ऑप्शन भी आपको दी गई है, वो 1.50 इज इक्वल टू 1 पाउंड है, और दो आपको ऑप्शंस दी गई हैं कि एक तो उसका करंट रेट जो है 1.60 हो सकता है या 1.40 हो सकता है। अब अगर देखें कि फ्यूचर स्पॉट रेट इज 1.60, लाइक अभी फ्यूचर रेट जो है वो 1.60 है, तो ऑब्वियसली ये 1.50 से ज्यादा है, तो आप इस केस में जो है वो ऑप्शंस जो है वो यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको 1.6 पे करते हो तो आपको लेसर अमाउंट मिलेगी। सो इन दैट केस आप क्या करोगे, $25,000 $25 million डिवाइडेड बाय 1.50। सो उससे क्या होगा कि आपको मिलेगा 16.767 मिलियन लेस। इसके बीच में आप करेंगे जो आपका प्रीमियम है जो आपने उसके लिए वो आपको चार्ज करेंगे, तो आपको नेट अमाउंट जो मिलेगी वो 16.64 पाउंड जो है वो मिलेगी, मिलियन पाउंड मिलेगी। लेकिन अगर आपका फ्यूचर स्पॉट रेट 0.140 होगा, मतलब ये लेसर होगा एक्सरसाइज रेट से, तो आपको ऑप्शन यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको आपको जो है बगैर ऑप्शन यूज किए आप जो है वो इसमें से ज्यादा वैल्यूज ले सकते हो। लाइक आप देखिए 25 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.40, सो यू विल गेट 17.86। इसमें से आप प्रीमियम निकाल दें 30,000 का, तो आपको 17.83 पाउंड जो है वो मिलियन पाउंड जो है वो मिलेंगे। सो इसलिए अगर तो आपका स्पॉट रेट 1.40 है, सो आपको उस टाइम पे ऑप्शन यूज नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका स्पॉट रेट जो है वो एक्सरसाइज रेट से ज्यादा हो गया है, तो इन दैट केस मतलब फ्यूचर स्पॉट जो है वो ज्यादा हो गया है, तो उस वजह से तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप जो है वो एक्सरसाइज प्राइस ले लोगे या ऑप्शन जो है वो यूज करोगे।